तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी? What did you need me for? So the next sentence is ये कैसा है? How is this? The next sentence is मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. I don't need this. The next sentence is मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं. I was wondering if you could help me with this. And the next sentence is कृपया थोड़ा धैर्य रखें, मैं इसे हल कर रहा हूँ. प्लीज़ bear with me while I sort this out. नेक्स्ट सेंटेंसेस यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपका मतलब यही था सही. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज़ वॉट यू मेंट राइट. मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ. आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM. सो दिस सेंटेंस इज यूज टू टेल अबाउट योर डेली हैबिट्स. लाइक दिस यू कैन से इट्स अबाउट योर डेली रूटीन. द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपको घर पहुँचने के बाद कॉल करूँगा. I'll call you once I reach home. This is used to maintain the communication. You can say that before leaving to someone that you will contact once you reach your home. So this is a positive sentence. You also feel secure and the other person also feels secured. The next sentence is thank you for your kind words. आपके मधुर शब्दों के लिए धन्यवाद.